स्पीकर साहब, जनाब वज़ीर आज़म साहब, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो स्पीकर साहब, मैं आपको और नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस आइडिया को जन्म दिया और उसके साथ साथ पूरा ताउन कमेटी के साथ किया। इससे पहले जनाब स्पीकर कि मैं कमेटी की कारकर्दगी पे कुछ रोशनी डालूं, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं समझता हूं कि ये लाज़िम है कि आइन और आज के दिन के बारे में कुछ कहा जाए। जनाब स्पीकर, आज से 50 साल पहले ये आइन पास किया गया और ये आइन जो पास हुआ ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था, जिसका कंसेंसस उस वक्त की तमाम सियासी जमातों, पार्लिमान और वफाक की तमाम इकाइयों के दरमियान था। जनाब चेयरमैन, इस आइन के मकासद में ये भी शामिल था कि ये इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करेगा, ट्राइकोटमी ऑफ पावर का रिस्पेक्ट होगी और फेडरलिज्म को ये इंश्योर करेगा सूबाई खुद मुख्तारी के ज़रिए से और एक पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में राइज होगा। इसके अलावा जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, इसने पाकिस्तान के अवाम को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर उनके बुनियादी हकूक जो हैं वो दिए। मिस्टर स्पीकर, आज कौम, पूरी कौम शुक्रगुजार है उन लीडर्स को जिनमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, खान अब्दुल वली खान, मुफ्ती महमूद, गौस बख्श बजिंजो, मौलाना शाह अहमद नूरानी, प्रोफेसर गफूर साहब और वो 27 या 25 रुकनी कमेटी जिसने आइन का मुसव्वदा तैयार किया और उसके बाद वो पूरी नेशनल असेंबली जिसने 10 अप्रैल 1973 को आइन को पास किया। But Mr. Chairman, as Chairman Mao Zedong has said, that one must do criticism and self-criticism. And when we look down 50 years down the line, unfortunately, today we stand in shame before our predecessors because the consensus document, Mr. Chairman, is being made controversial and is being treated as a joke. Its original intent is being replaced by the doctrine of reading in. Trichotomy of power is being violated. And further, Mr. Speaker, we were unable in history to prevent the Constitution from being held in abeyance by military dictators. Today, institutions are functioning under the Constitution, are experiencing infights,
and there is a clash amongst institutions. That is the judiciary, parliament, and the executive. History, Mr. Chairman, Speaker, is replete with clashes and transitions. In India, in 2017-2018, there was an infight within the judiciary, and during the period of its emergency, there was a standoff between Parliament and the Supreme Court. But we are experiencing such clashes, Mr. Speaker, in a vicious political power game. Therefore, there is seriousness in the air, because principal politics have been replaced by egoistic politics. Rule of law has been replaced by tiny warlords. Institutions are being replaced by personal fiefdoms. And all this is opening avenues for indirect or direct involvement of the establishment. In these circumstances, Mr. Speaker, the Parliament is celebrating the 50 years of the Constitution, and the following, amongst other steps, were taken by the committee. The committee that was notified, Mr. Chairman, consisted of Mr. Ishaq Dar, Senator, Mr. Azam Nasir Tarar, Senator, Mr. Kamran Murtaza, Senator, Ms. Maryam Aurangzeb, Member, National Assembly, Mr. Agha Hassan Baloch, MNA, Mr. Amir Haider Azam Khan, MNA, Dr. Nafisa Shah, MNA, Dr. Muhammad Afzal Khan Dandla, MNA, Ms. Wajia Kamar, MNA, Engineer Shabir Hussain Qaim Khani, MNA, Mr. Khalid Hussain Maksi, MNA, Mr. Faratullah Babar, and Mr. Zafar Khan. By another notification, 4 honorable members of the National Assembly were joined in the committee, and they were Ms. Mehnaz Akbar Aziz, MNA, Mr. Mohsen Dawar, MNA, Ms. Aisha Azim, MNA, and Mr. Ramesh Kumar, MNA. Since the notification of the committee, Mr. Chairman, Mr. Speaker, the advisory committee held 6 meetings और इसने 5 सब कमिटीज तश्कील दी। इन 5 सब कमिटीज का ताल्लुक, जनाब स्पीकर, एक था सब कमिटी ऑन द इंक्लूजन ऑफ करिकुलम, यानी आइन को निसाब का हिस्सा बनाना। दूसरी सब कमिटी थी, जनाब स्पीकर, ऑन द एजेंडा फॉर द इंटरनेशनल कन्वेंशन। जो तीसरी सब कमिटी थी, जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, उसका ताल्लुक मीडिया से था। जो चौथी, उसका ताल्लुक हायर एजुकेशन से था। और जो 5वीं सब कमिटी थी, उसका ताल्लुक डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जो मुख्तलिफ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हुए। इस कमेटी ने, जनाब चेयरमैन, एक कॉम्प्रिहेंसिव मीडिया प्लान तैयार किया और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें मीडिया के लिए इसमें तैयार की गई। एक एग्ज़िबिशन कमेटी, एक एग्ज़िबिशन का भी इनेकाद हुआ, जो आप जब एंटर होते हैं नेशनल असेंबली की बिल्डिंग में तो आप उस एग्ज़िबिशन को आज वहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ बुक एग्ज़िबिशन बाय द नेशनल बुक फाउंडेशन, exhibition of historic manuscripts and constitutional documents, designing and issuing of commemorative stamp, and designing and issuance of commemorative coin. इसके साथ जनाब चेयरमैन एक रेजोल्यूशन आज इस ऐवान में पेश की जाएगी, जो पुरानी स्टेट बैंक बिल्डिंग है, जहां पे पहला कौमी असेंबली का और सेनेट का इजलास हुआ,
اس کو نیشنل ہیریٹیج میں کنورٹ کرنے کے لیے اور اس کو ریسٹور کرنے کے لیے وہ ریزولوشن پیش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب چیئرمین ایک بہت اور میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ چیز جو اس کمیٹی نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا وہ یہ کہ نہ جانے کیوں پاکستان کی ریاست اس بات سے گھبراتی ہے کہ کوئی مونیومنٹس جو ہیں وہ تعمیر کیے جائیں جن کا تعلق عوامی جد و جہد یا عوام کے حقوق یا آئین یا پارلیمان سے اس کا تعلق ہو۔ اس لیے یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ 50 سال گزرنے کے بعد وہ سرزمین جو بے آئین تھی، وہ سرزمین جس کے پاس آئین نہیں تھا، 50 سال گزرنے کے باوجود جناب اسپیکر کوئی مونیومنٹ اس کی یادگار نہیں تھی۔ لہٰذا آج آپ نے فاؤنڈیشن سٹون رکھا ہے ڈی چوک کے اوپر، جہاں پہ آئین پاکستان کا مونیومنٹ جو ہے وہ تیار انشاءاللہ ہوگا اور 23 اگست میں اس کو جو ہے کمیشن کر دیا جائے گا اور وہ تیار ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر جو ایکڈیمک ایکٹیویٹیز ہوئیں ان میں inclusion of constitution in academic curricula till primary level, institution of constitution chairs in universities, research grant by HEC for research papers on the constitution اور declamation contest جو میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں مڈل اسکول، کالج اور یونیورسٹی لیول کے اوپر منعقد کیے گئے۔ جناب چیئرمین، اس 10 اپریل کو جو میں سمجھتا ہوں ایک تحفہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی سیاسی اشرافیہ دے سکتی ہے، to the founders of the Constitution, the people and the younger generation is, Janab Speaker, a rekindling of the realization that brought into existence the Charter of Democracy, that democracy can only be strengthened by acknowledging past mistakes by political parties and not by wooing the establishment. That the Charter of Democracy, number 2, between political parties is essential if the system is to survive. An intra-institutional dialogue to ensure the preservation of trichotomy of power is essential, Mr. Speaker. The forum of both these initiatives is Parliament, particularly the Committee of the Whole of the Senate. In conclusion, Mr. Speaker, as we prepare to pass the torch of leadership to a new generation of Pakistanis, let us give them a Pakistan in which there is rule of law, independence of the judiciary is ensured, executive is accountable, the establishment is confined to its constitutional role, provincial autonomy is guaranteed, Pakistan's cultural and linguistic diversity is acknowledged and respected, Parliament is supreme, and the Constitution is the ground norm of our society. Shukriya, Janab Speaker.